my channel. So as you can see, I have a Nykaa box right here, so that can only mean one thing. Today I'm going to do a Nykaa haul. मेरे पास actually बहुत सारे डब्बे हैं. Like look at all of this. If you're new here, make sure you like this video, subscribe to my channel. उसके लिए red subscribe button पे click कर देना. Click on the bell button right next to it. You can also follow me on Instagram. And yeah, we'll just get over it. मैं एक हाथ से कैसे करूँ? We'll just get started. Also, I know I will get a lot of questions on my earrings. So ये मुझे एक Instagram store ने भेजे थे. The Instagram store is called Jewelry Store. मैं यहाँ पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका हैंडल दे दूंगी. You can go and check them out. उनके पास बहुत different kinds of jewelry है and आपको शायद कुछ पसंद आए. I really love these. पहली 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल essential है. तो मैंने Nykaa पे ये देखा था. Veggie Clean cleans all fruits and vegetables. Basically liquid soap for your vegetables and fruit. And मैंने ये जब देखा था, I was just like super shocked. I know a lot of people are taking precaution by washing their vegetables and fruits with surf and hand wash. इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया क्योंकि ये मेरे पास अभी आया है एक दिन पहले. आई थिंक यू ऑल शुड गेट दिस बिकॉज ये काफी चीप है एंड देन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. सो आई विल जस्ट कीप यू सॉर्टेड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के डिपार्टमेंट में. देन आई गॉट मास्क लाइक फेस मास्क. सो ये एक्चुअली एक पैक ऑफ 50 था. मुझे नहीं पता इन्होंने इंडिविजुअली क्यों भेजा, बट आई गॉट इट बिकॉज ये सेल पे था. सो आई थॉट माइट एज वेल गेट इट क्योंकि अब तो मास्क हमें ज़रूरत पड़ेगी सारा टाइम. सो या दैट इज़ आई गॉट लाइक दीज मास्क जो आप ऐसे करके लगा सकते हो, इलास्टिक वाले. मुझे वो बांधने वाले नहीं पसंद एंड मुझे मेडिकल वाले मास्क ही सबसे सही लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स वो मेडिकल मास्क है. सो यू नो इट हैज़ मोर प्रोटेक्शन. I also got these masks. Now these have that 6-layer protection and all of that. I'm not going to open these क्योंकि ये जब मैं बाहर पहनूंगी then only I'll open it. Now मैंने थोड़ी बहुत मेकअप एंड स्किन केयर वाली चीज़ें भी खरीदी है. So I'm going to show it to you guys. The first thing I got is a face mask and it is the Nykaa, I think I'm saying it right, Nykaa Orange Boost Face Souffle. So this is a face mask but ये souffle जैसा है. मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो इट टू यू गाइज फर्स्ट. बट या दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. द पैकेजिंग इज सो क्यूट. दिस हैज नो प्रिजर्वेटिव्स एंड या ये बस मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगा. इट वॉज ओनली फॉर 100 रुपीज़. तो मैंने खरीद लिया. आई विल ट्राई दिस एंड आई लेट यू गाइज नो हाउ आई फील अबाउट इट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी हूँ इज द एपिसॉफ्ट AC मॉइस्चराइजर. तो मैं अपना मॉइस्चराइजर अदिति के घर पे भूल गई थी एंड आई कैन नॉट डू विदाउट दिस नाउ. आई हैव टू अप्लाई इट एवरी सिंगल डे. सो दैट इज वाई आई गॉट इट. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स. It has SPF. It is non-comedogenic and hands down one of the best moisturizers that I've ever used. मतलब ये इतना लाइट वेट है कि आपको स्किन में डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाएगा and it will just moisturize it. बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होगा and yeah, it will give you that SPF that your skin needs. I also got this Biotique Bio Morning Nectar. तो ये निधि को बहुत ज़्यादा पसंद है and that is why I got it because she really raves about it and अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया कभी भी. This is for all skin types and this is basically a moisturizer for your body. निधि ये अपने फेस पे यूज करती है. I don't know if I will use it on my face. I don't know. अगर आपने ये फेस पे यूज किया है, let me know how you like it. मेरी acne prone and oily skin है, so yeah, I just don't want to risk it if that makes sense. Another thing that I got from Episoft is their cleansing gel. This is the cardboard box and this is what the gel looks like. ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया. ये मैं वीडियो में पहले दिखाना चाहती थी. दिस इज़ फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन. दिस इज़ ऑल्सो डर्माटोलॉजिकली सेफ एंड नॉन कॉमोडोजेनिक एंड इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे एंड इन जनरल लोगों ने एपिसॉफ्ट के स्किन केयर की बहुत तारीफ़ की थी. तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी ट्राई कर लूँ. एंड दिस इज़ अ जेल. मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया बट आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. मेरे पास और भी 3-4 और फेस वॉशेज है जो मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ द Laneige वाटर स्लीपिंग मास्क. दिस इज़ द बिगेस्ट टब जो इनका फुल साइज था, मैंने वही खरीद लिया. You guys know I love this so much. This is hands down one of the best moisturizers for your skin. इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम है, वाटर जैसा है, बट it's just so nourishing and I feel like this is an investment. I know महंगा है but let me tell you कि sometimes skincare is an investment. I cannot recommend this enough to be honest and no matter what your skin type is, I think you should give it a try. The next thing that I got, अगर आपने मेरा favorites देखा है then you must have seen it. It's the Nykaa Serial Kisser Lip Balm. Oh my god, the name. Oh. This is the raspberry flavor. It smells like raspberries and इसका काफ़ी hydrating and moisturizing formula है. It's a good lip balm actually for the price and I have been using it a lot for the past 1 month. The next thing that I got is the Wheat Sensitive Touch
electric trimmer. This is what it looks like. Now I got it for 2 reasons. One, it was on sale, and second, इसके बारे में हर कोई तारीफ करता है, like everybody loves this. So I thought कि मैं खरीद ही लेती हूँ. I haven't actually used this अभी तक, कि अभी भी इसके पैकेजिंग में है क्योंकि मैं वीडियो में दिखाना चाहती थी. So this is what it looks like. This is a very cute kit, yeah. This is nice, like it comes with a cover which I really appreciate. This is the product, this is what it looks like. I'm pretty sure आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा. So this is like for your upper lip and your eyebrow area. यहाँ पे छोटे ब्लेड्स हैं, यहाँ पे लंबे वाले ब्लेड्स हैं. And then you get a lot of attachments for your bikini hair removal, for your face. I do shave my face and this is a one-time investment, so I got it. And इसमें बहुत अच्छा सेल था, like 1000 rupees or something off था. So I'll use it in a video, let you guys know if I like it or not. And I might just do a whole shaving video क्योंकि बहुत लोग request कर रहे हैं कि मैं कैसा shave करती हूँ. So once I get a hang of this, I will use it and show you guys कि how I do it. And if you guys are into shaving your face and stuff, so I think this is a good one-time investment. And अभी सेल चल रही है तो आपको एक अच्छे प्राइस में मिल जाएगा. Alright, now we come to makeup. So the first thing that I got is from Wet n Wild, and वो है Wet n Wild का makeup sponge. This is what the sponge looks like. So ये flat applicator है, and then यहाँ पे वो bouncy है, and this is the butt, and this is the कोने में लगाने के लिए. I really like the shape, like it has everything, so it will really cover your entire face. इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, and I can tell that ये बहुत squishy होगा, and it will bounce on the face really easily. And this is like pretty cheap. It retails for only like 300 rupees, which according to me is a good price क्योंकि sponges थोड़े expensive होते हैं. पैक वाला भी 600-700 रुपए का है, so this is cheaper. The next thing I got is also from Wet n Wild, and वो है उनका contour palette. Who remembers this? मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ करती थी, and then I stopped using it क्योंकि मेरा मुंबई में टूट गया था, and then I did not repurchase it. This is the contour palette in the shade Dolce Delice. This is the contour powder, and ये under eye powder है, and this is one of the best under eye powders ever. ये इतना seamlessly आपके under eyes को set कर देता है. इसका थोड़ा yellow undertone है, I don't know if you guys can see. So yeah, that just sets it without making it look very ashy. I personally love this, and इसमें एक darker shade भी आता है. So अगर आप deeper skin tone के हो, you can use it. This is also a very good contour shade. Like it gives you that perfect chiseled look. I really love using this, that is why I repurchased this. The next thing that I got, वो मैंने ऐसे ही देखा था, and I was pretty like intrigued. And ये है Face Shop का oil control pore balm. First of all, the packaging is like super cute. Like ये एक tin का डब्बा है, and it has a teddy bear who's playing tennis. I don't even know, but like it's very cute. And this is the applicator जो मैं use नहीं करूँगी. And then this is the product. You guys can see I have already used this, and I really like it. It is a pore balm, so आपके जो pores है वो smooth लगेंगे, and उनका जो appearance है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. I think it's a pretty good product for oily skin. It will just really smooth out your skin, and it's not too heavy. You just need a little bit. मैं इसको finger के help से ही apply करना पसंद करती हूँ because I feel like उससे जो product है वो ज़्यादा अच्छे से set हो जाता है face पे. And yeah, you can check it out अगर आपको oily skin है, pores है, या फिर आपको texture issues है. Oh, another thing from Wet n Wild I got are these oil blotting sheets. I have wanted to try oil blotting sheets for so long. मेरी skin बहुत ज़्यादा oily हो जाती है, and मैंने सोचा कि अभी समर आ गया है तो खरीद ही लेते हैं. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. यहाँ पे आई थिंक 50 या 100 शीट्स है, 50 शीट्स है. मोस्टली मैं टिश्यूज ही यूज़ करती हूँ, बट आई वांट टू सी कि इसको यूज़ करके कोई डिफरेंस होता है कि नहीं, एंड देन आई सी व्हाट आई प्रेफर, बिकॉज टिश्यू तो मेरे घर में वैसे ही पड़ा रहता है, बट अगर ये बेटर हुआ देन आई विल रीपरचेज इट अगेन. ऑलराइट, आई गॉट सम स्टफ फ्रॉम नायका क्योंकि नायका पे सेल थी, सो आई वाज जस्ट लाइक माइट एज वेल. द फर्स्ट थिंग आई गॉट इज द Daydream eyeshadow palette. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था, लाइक इट्स बिन 3-4 months actually. I don't know ये कौन सा शेड है, but this is what it looks like. It has a lot of pinks and stuff. Now this is pigmented, like don't get me wrong, it is pigmented, but it's a little chalky, like, and it retails for 600 rupees. Now I think कि Swiss Beauty का जो 9 palette eye shadow है वो 200 या 300 रुपए का है, and that is better than this. So yeah, I got it just to see कि ये कैसा परफॉर्म करेगा. आई डू थिंक आई यूज्ड इट वंस और ट्वाइस, बट मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मैंने इतने टाइम पहले खरीदा था. आई यूज इट अगेन, बट या आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ इट. एंड इसका जो पैकेजिंग है इट इज़ सो चीप, लाइक आई कैंट इवन एक्सप्लेन इट. मैं अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊंगी ना, ये मैं तोड़ सकती हूँ लिटरली. सो इट इज़ दैट चीप. I wouldn't really recommend you guys to buy this. The next Nykaa thing that I really liked is actually the blush duo.
दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इस पे सेल थी एंड आई वाज जस्ट लाइक आई हैव टू गेट इट बिकॉज आई लव ब्लश एंड दिस इज इन द शेड malibu barbie. So I like इसका पैकेजिंग क्योंकि इसका ये मैग्नेटिक पैकेजिंग है एंड इट्स लाइक वेरी स्लीक. Also you get literally the most beautiful shades of blushes, like look at that, perfect for summer. And yeah, मुझे दोनों shades बहुत पसंद आए. They are pigmented, they are blendable, it looks really beautiful on the skin and yeah, it just blends very easily. And the last thing in this haul is a kajal and that is the Naica kajal. ये मैं ऐसे checkout करते time मैंने देखा. This is like for 150 rupees and that is the only reason I got it because मैं वैसे K beauty वाला लेने वाली थी. इसके reviews अच्छे थे and this is what the kajal looks like and it kind of reminds me of the colossal kajal. मैंने इसको एक बार waterline पे use किया था and it was okay, like इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लाइक जो के ब्यूटी वाला है वो इतना ज़्यादा डार्क है एंड एकदम लाइक बज नहीं करता ना, तो उसका एक अलग ही लुक आता है. दिस डजंट स्मच टू मच, लाइक थोड़ा सा स्मच करता है. इट इज़ प्रिटी ब्लैक. ओवरऑल फॉर द प्राइस आई वुड से इट इज़ प्रिटी डिसेंट. सो इफ यू हैवंट चेक दिस आउट यू कैन चेक इट आउट. आई टोटली फॉरगॉट टू शो इट टू यू गाइस बट आई गॉट द Nykaa hand sanitizer. This is huge, like this has 500 milliliters of product and it retails for 250 rupees and that is the reason I got it because बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है एंड इट इज़ चीप. सैनिटाइजर बहुत महंगे आते हैं आजकल एंड या इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सैनिटाइजर्स फॉर अ गुड प्राइस यू कैन चेक आउट Nykaa के. इट हैज 70% अल्कोहल, सो या इट इज़ लाइक अ प्रीटी डिसेंट सैनिटाइजर. एंड या विद दैट आई फिनिश माई Nykaa हॉल. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो यू कैन गो चेक इट आउट. लेट मी नो अगर आपने Nykaa के सेल से कुछ खरीदा. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव and also follow me on Instagram and yeah, I will see you guys next time. Bye bye.